So, greeting students. So, up to now we discussed about various ways by which we can combine the resistors or resistance. So, now we will do the numericals based upon those combinations. So, these are the important numerical related to the combination of resistors, even related to the board exams. So, try to understand it. So, first we will discuss the simple numericals, then we will move towards the slightly complex numericals. So, these are the important ones. So, listen carefully. So, topic is numerical based upon combination of resistors. So, first numerical is if for resistance each of value 1 ohm is connected in series, what will be the resultant resistance? इसमें वो क्या बोल रहा है आपको कि वी हैव 4 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टर, हर एक की वैल्यू कितनी है 1 ओम, उन सबको हमने किस में कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर. सो आफ्टर कनेक्टिंग देम इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू? सो द आंसर शुड बी, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि कनेक्ट किया कैसे है. तो उसने हमारे को यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? when resistors are connected end to end. कितने थे? 4 resistance, हर एक की वैल्यू क्या है 1. so this is R1, this is R2, this is R3 and this is R4. each are having value 1 1 1 ohm 1 ohm. now we will use the formula for the combination of resistance in series. So for that, total resistance, equivalent resistance, और you can also say resultant resistance. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? Here we have 4 resistance. The formula is you just have to add all 4. So what are the value of R1, R2, R3 and R4? All are having value 1 ohm. So the result is 4 ohm. कि when resistors are connected in series, तो जितने भी आपको वैल्यूज दे रखे हैं एड ऑल ऑफ देम, बट ओनली फॉर दोज विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. कि अगर ये इसमें बोला था कि वी हैव 4 रेजिस्टेंस, हर एक की वैल्यू कितनी है 1 ओम एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इन न्यूमेरिकल कि हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो इट इज रिटन हियर ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज. what will be the resultant resistance? कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, विच इज जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, why I am writing as? because they are connected in series. So R1, R2, R3, R4 all are connected, all are added. So resultant value is 4 ohm. Now read the second question carefully. So for the second question, what is written? A resistance of 6 ohm. तो एक रेजिस्टेंस है हमारे पास कितने ओम की? 6 ओम की. इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो अंडरलाइन इट कि वो हमारे किस में है? सीरीज में कनेक्टेड है. तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में. तो ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. तो फर्स्ट लाइन से हमारा कंक्लूजन क्या निकला है? क्या गिवन है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है 1 2, they are connected in series. So this is the combination of resistance in series. So this is the first resistance, this is the second resistance or resistor. तो फर्स्ट रेजिस्टर कितने ओम का है? 6 ohm. सेकंड रेजिस्टर कितने ओम का है? 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. So during the discussion of potential difference, so what is the we discuss what is the source of potential difference? A cell or battery. और उसकी पोटेंशियल कितनी है? 20 वोल्ट. So two resistance which are connected end to end and connected to a source of potential difference which is cell or battery which is of 20 volt. So calculate the current. So what we have to find out? Calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance. So during the discussion of combination of resistance,
we discuss the two important terms. Current will same throughout the combination, so throughout the circuit, कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे रजिस्टर्स को तो जो सर्किट है उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो सब जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो I will remain same on R1 and R2. Second was potential difference will be different, मीन्स कि R1 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और R2 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2. वो हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट. तो करंट हमको क्या निकालना है, I, कि I की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है. नेक्स्ट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है वो टोटल की तो गिवन है तो वो हमको निकालनी नहीं है, हमको किसकी निकालनी है, जो 6 ओम रेजिस्टेंस पे या 6 ओम रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए वो हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी विल अप्लाई द ओम्स लॉ. सो दिस इज द फुल सर्किट, करंट पूरे सर्किट में सेम है तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R. V पूरे सर्किट की गिवन है, दैट इज द 20 वोल्ट. I we have to calculate. Now the next term is R. अब पूरे सर्किट के अंदर थ्रू आउट द सर्किट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग RS. तो पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, RS. RS means total resistance of circuit. So there are two resistance, R1 and R2. So RS is equal to R1 plus R2. So R1 is 6, R2 is 4. So total is 10 ohm. So we have the value of total resistance in the circuit, which is 10 ohm. Why I have added these two, because both of them are connected in series. So now we will use this in this formula. So in the numerical statement or even in this circuit diagram, the total potential is given, which is 20 volt. Second is I we have to calculate, and what is the total resistance in series, 10 ohm. So after this, by rearranging you will get 20 by 10, and the current flowing through the circuit is 2 ampere. So I hope this numerical is clear up to this point. कि first we have to calculate the I, we have calculated the I. Second is we have to calculate the potential difference. So how we can calculate the potential difference? So I am erasing this part, the calculation of total resistance. So next is we have to calculate the value of V1. Now we will apply the Ohm's law to individual resistance. तो अगर फर्स्ट वाले को हम Ohm's law लगाते हैं तो वो कितना आएगा, V1 I into R1. V1 that we have to calculate, क्योंकि वो बोल रहा है कि 6 ओम पे आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी. I is the current that is flowing through the circuit. R1 is the resistance at this point. So V1 we have to calculate. I will remain same throughout the circuit. So what we have calculated for the I is 2 ampere. What is the value of R1, which is 6. So total potential difference is 12 volt at first resistor. कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगी फर्स्ट के ऊपर वो कितनी होने वाली है, 12 volt. So how we have solved this numerical? First read the statement. A resistance of 6 ohm is connected in series. एक रेजिस्टर है 6 ओम का, उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, विद द अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. तो दोनों को हमने कनेक्ट किया सीरीज में. नेक्स्ट, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट पावर सोर्स या बैटरी के साथ उसको हमने कनेक्ट कर दिया. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, अब इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस. करंट सेम रहता है पूरे सर्किट के अंदर, चेंज नहीं होता. So that is why I will remain same either on R1 either or R2. It is connected to a 20 volt potential difference. So first we will calculate the total current flowing through the circuit. We applied the Ohm's law on the this electric circuit. V is equal to IR. RS is total resistance. They are connected in series. तो हम total कैसे निकालेंगे, by adding them. 6 plus 4 10. So by this we can calculate the current. Second we have to calculate the
calculate the potential difference at first. So V1 is equal to IR1, so V1 we have to calculate. I हमने यहाँ पे calculate किया है, 2 into resistance is 12 volt. So that's how we can solve this type of numerical. In series if they are asking about the potential difference at a particular resistance, तो उस particular resistance के ऊपर आपको क्या apply करना है, Ohm's law. Next is numerical number 3. In numerical number 3, it is a simple numerical. Calculate the equivalent resistance when two resistance of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. तो पहले हमको ढूंढना है कि वो कनेक्ट किस में कर रहा है, पैरेलल के अंदर. So we have two resistance. One is, first is R1 3 ohm, second is R2 which is 6 ohm, and they are connected in parallel, and they are asking about calculate the equivalent resistance. तो parallel का formula क्या होता है, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by RP, what is the value of R1? 1 by 3. What is the value of R2? 1 by 6. Now solve this. 1 by RP is equal to 3 by 6. You can take solve by your method by LCM. So 6 plus 3, which will be equal to 9 by 3 into 6. After solving this, you will get 1 by RP is equal to 1 by 2. The most common error in case of answer of parallel combination, कि हम यहाँ तक solve करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं. No, you have to reverse the answer because it is not RP, it is 1 by RP. So for RP it will be 2 ohm. तो आपको क्या करना है, उसको रिवर्स करना है, तभी आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा. नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 by RP की वैल्यू है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. आफ्टर गेटिंग अप टू दिस पॉइंट यू हैव टू रिवर्स और इनवर्स योर आंसर. तो यहाँ पे आने के बाद आपको उल्टा करना है, तो क्या आ गया, RP इज इक्वल टू 2 ohm. एंड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ कॉम्बिनेशन वी डिस्कस व्हेन resistors are connected in series, total resistance of system will increase or total resistance of circuit will increase. But when they are connected in parallel, you can see 3 and 6 are the individual resistance. What is the total resistance of the circuit? 2 ohm. तो उसमें क्या हो गया, it is decreased. Now we'll move to the fourth numerical. So fourth numerical is, what possible value of resultant resistance or equivalent resistance one can get by combining two resistance. One value 2 ohm. So what is given, R1 is 2 ohm, R2 is 6 ohm. वो हमको बोल रहा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, वन इज ऑफ 2 ohm, सेकेंड इज ऑफ 6 ohm. हाउ दे शुड बी कनेक्टेड सो दैट यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज. तो हमको बता नहीं रहा है वो कि हाउ दे शुड बी कनेक्टेड, आइदर इन सीरीज और पैरेलल. तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज आस्किंग व्हाट पॉसिबल वैल्यूज. तो पॉसिबिलिटीज आर 2, आइदर इन सीरीज आइदर इन पैरेलल. So we have to calculate both. So when they, let's assume when they are connected in series, so in that case R1 plus R2, 2 plus 6, 8 ohm. Second is in parallel, so we will use the parallel combination formula. 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by RP is equal to 1 by 2 plus 1 by 6. Now solve it. 2 into 6, 6 plus 2. So 8 by 2 into 6. So 8 by 2 into 6. So 1 by RP is equal to 2 by 3. Again we have to apply that, we have to reverse this. So RP is equal to 3 by 2, which will be 1.5 ohm. So I hope these basic questions are clear to everyone, because complex will be only, the complex numerical will only be clear when you are
aware about the basic processes ki how we can calculate resistance when they are connected in series, when they are connected in parallel, because in next few modules you will get numerical in which both combinations are there, both combinations will be there, series combination, parallel combination, तो दोनों भी हो सकते हैं, तो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे उसके केस में. So first again go through this numerical, find out what is the basic of solving these type of numerical, what is the basics of series combination, what is the basics of parallel combination. So thank you students.